Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now, what I want you people to kindly write down in your copies is this. Just write all the formulas related to logistic regression in your copies, and then we'll start our discussion. Written class? Is it done, beta? Okay, somebody stated that. Okay, Kanchan has done. What about others? सबने लिख लिया है? Yes, ma'am. Okay, let's talk about it. In the last class, we discussed about what exactly the logistic regression is. This is basically the governing equation, that is y is equal to b naught plus b1 times x, where b naught is basically your intercept and b1 is the slope. And it can be further enhanced. Then it will be written as this. If I have more number of features, then I'll be writing it like this. Is it okay? Basically in the form of multilinear regression form. Fine? Yes, ma'am. Fine. So after this, what we said that in case of logistic regression, it actually works on the probability estimation of the data set, yeah, data points. So what we simply said that if we'll simply see that P is our output, then it is nothing but a function that is governing this equation. Which equation? Which is equal to this. So here WT is nothing but weight transpose, where weights are nothing but your B1, B2, B3, and so on till B of n. Okay. It can be rewritten in the form of, or I should say simply it is basically, and this B is nothing but the intercept. So I can simply write it to be B naught. It is in some of the books, it is also written in the form of sigma WT x plus B, where sigma is a function. Now this h of theta or sigma is basically a function that is basically called as sigmoid function. This sigmoid function actually is being given by a mathematical formulation, that is 1 upon me 1 plus exponential minus t or minus function. So over here, this is actually the form of the sigmoidal plot. But in our case, how we are using it, we are simply writing it in terms of, let this be the value of h of theta. If I'll simply write, so I'll simply say that my p or y z is nothing but 1 upon me 1 minus e raised to power minus whatever I am calculating. Let this be p caret, this be p. And my p is nothing but, I'll write with a different form. My p is nothing but it is equal to b naught plus b1 times x plus
B2 times X, where this P is having only two features, X1 and X2. B0 is the intercept, B1 and B2 are the slope. Is it okay? Or the coefficients of X1 and X2. Clear है class till this point? यहाँ तक हम लोगों ने कल की क्लास में किया था. Is it fine? Yes, ma'am. Okay. After this, in the last class, I started with cost function where I simply asked you a arbitrary situation. मैंने कुछ पूछा था करके आने के लिए. I just said one thing that if my cost is less or decreasing, my accuracy is more. If my cost is more, my accuracy is less. हाँ मैंने एक example दिया था कि if I have 100 bucks and 1 lakh rupees, so exactly which one is better? या कैसे मतलब if I want to purchase 50 commodities or 50 items, how will I go about it? I hope सबको याद होगा. So we will be working on this part today. And in tomorrow class, when we will be going for the practicals, in the practicals, we'll first study about the errors. But right now we'll be going for the cost function. So let's talk about the cost function. ये equation सबने अपनी copies में लिख लिया है. Right? Is it Yes, okay, ma'am. class? Yes, ma'am. I'm just changing the slide. So now just let me know what exactly you people got to know about your cost function. What exactly for you is being defined as a cost function. Generally, as a layman, मैं किसी को बोलना चाहती हूँ there is a cost function. What exactly you people will be understanding by cost function? If I talk about in terms of linear regression, I had written something called as error, which is nothing but y actual minus y predict. Yes or no? Yes, class. मैंने यही चीज बोला था. And after that, I also said जितना error मेरा कम होगा, उतनी ज्यादा मेरी accuracy होगी. True or false? Yes, ma'am. So now, the same concept is being implied to your logistic regression, but with a different format. Over here, the error is being called as in the case of linear regression, it simply says because linear regression is a continuous value problem. वहां पर हमने note किया था कि हम वहां पर उसे classification model में भी लेकर आ रहे थे, but it is having a continuous numbers. Fine. It is a continuous value problem. So if it is a continuous value problem, so the class that we are defining it could be a possible number. जो कि जैसे हमने iris data set में देखा है, we are getting the numbers and on the basis of numbers we classified it as to be a setosa, versicle or a virginica. Fine. But in case of logistic regression, if I want to plot my cost function, I'll tell you what exactly we mean by cost function. With features, मेरे पास x1 है, x2 है, x3 है, x4 है. Let it be, for example, I have x1 and x2. If I'll plot accordingly features and the cost function, so I'll have a plot like this is the amount of plot that we are getting. Right? Class, we understand the meaning of minima and maxima. Do we know that? What exactly we mean by minima and maxima? Yes, first years. Hanji, first years, I want to know. What is minima and maxima? Who will tell me? मैंने कुछ नहीं किया है. मैंने x एक्सिस पे फीचर्स बनाए हैं, y एक्सिस पे कॉस्ट फंक्शन बनाया है. उसके बाद मैंने एज पर द फीचर्स कुछ किसी फंक्शन को यूज करके कॉस्ट मैंने उसका कैलकुलेट किया हर फीचर के लिए एंड आई प्लॉटेड दैट. मैंने प्लॉट किया तो मेरे को कुछ ऐसा ग्राफ मिला. नाउ आई जस्ट वांट टू नो व्हाट वी मीन बाय मिनिमा एंड मैक्सिमा. हाँ जी, कौन बताएगा मुझे?
Ma'am, largest value of function is called maxima and smallest value of function is called minima. ओके इस पूरे ग्राफ में बेटा मैक्सिमा और मिनिमम मेरे को बता सकता है कोई? दिस इज माय ए पॉइंट, दिस इज माय बी पॉइंट, सी Ma'am, डी. C is the minima. C is the minima. Of all the points, is C the minima? Yes, ma'am. Yes, And ma'am. what are the maximum? Which is the maxima value? F. Ma'am, F. F is the maxima value. Okay, fine. Now let's talk about now this C. ये जो value of C की depict कर रहा है, that is basically called as local minima. I'll tell you what we mean by local minima, and there is one more thing called as a global minima. So can just understand अभी के लिए सिर्फ ये समझना कि there are two types of minima, that is local minima and global minima. We want a function that will give the model to settle down at a local minima. Then the function is being defined as a cost function. Getting my point? एक ऐसा फंक्शन हम लेकर आए जिसकी वजह से पूरे मॉडल का कॉस्ट का मतलब कंप्यूटेशनल कॉस्ट या जितना भी उसको टाइम लग रहा है, वो जो कॉस्ट है वो एक लोकल मिनिमा पे जाकर सेट हो, उस फंक्शन को हम कॉस्ट फंक्शन बोलते हैं. क्लियर हुआ? डेफिनेशन. Cost function is a function where the error is minima, or I should say where the machine learning algorithm or the model settles at the local minima. It is called as a cost function. Is it okay? Yes, First years? Fine. So now let's talk about what is local minima and global minima. So class, I have one graph like this. And another one is like, तो कौन बताएगा? Which is basically global का मतलब होता है सब में, local का मतलब होता है कुछ में. तो कौन मुझे बताएगा? In the first case, this is my case 1 and this is my case 2. Which is the local minima and which is for the global minima? ध्यान से देखो, local का मतलब for some set, global means for whole of the set. सिर्फ अभी डिपिक्ट करना है. किसी को समझ में आया है कि लोकल मिनिमा और ग्लोबल मिनिमा का मतलब क्या हुआ? मैम, ग्लोबल मतलब तो होता है सबके लिए, लोकल मतलब सिर्फ उसी एक फंक्शन के लिए. हाँ, किसी एक सबसेट के लिए. फाइन. तो क्या हम इमेज 1 और इमेज 2 को देख करके आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं विच इज लोकल मिनिमा, विच इज ग्लोबल मिनिमा? मैम किसी एक सबसेट के लिए मतलब कैसे? फिर तो जितने कर्व्स हैं उन सब के लिए अलग अलग आएगा लोकल. Exactly. This is what exactly I need to know. Okay, class. Let's discuss now. Class, अभी cost function सबको समझ में आ गया है ना? Continuous second is global minima. You are right. We will talk about it. Class, cost function सबको समझ में आ गया है? At least I'm not saying पूरा वो फॉर्मूला अभी मैंने कुछ नहीं समझा, अभी कॉस्ट फंक्शन शुरू हुआ है, बट जो स्टेटमेंट मैंने दी है अभी तक कि एक ऐसा फंक्शन जो कि लोकल मिनिमा पे सेटल करे इज कॉल्ड एज अ मैम आवाज नहीं आ रही. Ma'am, you are not audible.
Class, am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इलेक्ट्रिसिटी चला गया, आई गेस अभी आ जाएगा तो आई डेफिनेटली रिकनेक्ट अगेन. ओके. Yes, I'll share the screen again, and the recording is already on. So class, let's talk about cost function की definition. सबको clear है? At this point, at least cost function की definition पता चल चुकी है सबको. What exactly we mean by that? Yes, class. Yes, ma'am. Fine. So let's talk about what is Yes, local ma'am. minima and what is global minima. Okay. So class, नियति. नियति बेटा अपना माइक ऑन कर ले. Yes, ma'am. Okay, Niyati. Data science, do you know something about data science? Class, everybody will listen to our conversation. Okay, Niyati. Yes, ma'am. Do you know something about data science? Yes, ma'am. I'm So studying that. what is data science as per your understanding? Through data science, we can predict something, any result which we need to predict on the basis of given data set. Okay. Can you just let me know the mathematical formula or mathematical equation related to linear regression? Simple Yes, linear ma'am. regression. Y is equals to ax plus b. What is A? A is slope of the regression line, and b is the intercept when x is 0 on the y-axis. Okay. So class, everybody listen to our conversation. Yes or no? Yes, ma'am. No. So just again go through it. Just tell me one thing. Moment I was asking something to Niyati, Niyati was taking time to respond, or she is instantly giving me the answer. I mean, she listened to the question, she analyzed instantly, and she started replying to the question. ऐसा हो रहा था या फिर it is like okay fine. What is something about data science? Data science is now she's mom, and after certain moment of time she started speaking. ऐसा कुछ हो रहा था? Okay. Another example. Okay, Surbhi. Yes, ma'am. Okay, Surbhi, recite the table of 2. 2 ones are 2, 2 twos are 4, 2 threes are 6, 2 fours are 8, 2 fives are 10, 2 six are 12, 2 seven are 14, 2 eights are 16, Fine, 9 fine, fine. Okay. Okay, class. सबने सुरभि को सुना? Yes, ma'am. Okay. Yes, Now ma'am. listen again. Surbhi, Yes, ma'am. I want you to recite the table of 47. Okay. 47 ones are 47, 47 twos are 94, हाँ. sorry, 47 threes are 134, हाँ. 47 fours are 181, Okay, 47. Surbhi. Okay, okay, fine. Surbhi, could you please recite the table of 131? Okay, 131, ones are 131, 131 twos are 262, 133s are, ma'am, just a second. Fine, fine, Surbhi. This is what exactly I want. Fine. The class, when it was something that is being already taught and trained very, very well, so you will respond so quickly. That comes under local minima. But and it is also called as a global minima. But if I am asking something, or if a test set, or if training is provided in such a manner that it takes time to get into the solution, proper correct solution, then the cost function is being increased. अभी जैसे उसने क्या बोला मैम 131 times 1 is 131, 130 times 2 is 262, 131 times 3 is ma'am just a second. Okay, so now for her the local minima, she is approaching towards the local minima. He is not yet at the local minima, but for the case of table of 2, he is at the local minima.
because he instantly recited the table of 2. Same goes with Niyati. The moment I asked, okay, what is linear regression? Can you please explain, give me the mathematical equation of the linear regressions? She instantly told me that. But the moment I asked something different, then it is being taking a lot of cost function. जैसे हम कहते हैं, जब हम लोग करते हैं, जब हमें कोई नया टॉपिक पढ़ाया जाता है, we tend to learn at a delayed rate. लेकिन हमें कोई एक टॉपिक जो ऑलरेडी बहुत अच्छे से आता है, उसी पे काम कराया जाता है, हम बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन करते हैं. होता है या नहीं होता? Yes, ma'am. होता है. So this is what exactly happens for the local minima and the global minima. So local minima is also called as global minima, or I should say global minima is nothing but a local minima for all the points. See, I have a data set जिसमें मेरे पास 2 फीचर्स हैं और मेरे पास टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स जो है m is equal to 15 है. टोटल डेटा सेट कितने हो गए? If m is 15, that means row is 15, n is 3 columns. So total is 45. इसका मतलब वो मेरा लोकल मिनिमा होना चाहिए, वो इन 45 के लिए होना चाहिए या एक के लिए होना चाहिए? 45 के लिए. 45 के लिए. अगर मैंने सुरभि को बोला है recite the table of 2, so I assume that whole of the class knows what exactly the table of 2 is. Yes or no? तो अगर मैं सुरभि की बजाय नेहा को बोलूंगी, नेहा रोज, can you please recite the table of 2? Yes, ma'am. 2 1 2 2 2 Exactly. So now where is the local minima? Is she taking the time? Okay, 2 1s are, I don't know. 2 2s are, I don't know. He is instantly telling me that. Okay, so we are moving towards the local minima. This local minima for all the values of your data points in the data set is basically the global minima. Fine. But if I'm turning out in terms of my features, x2, x3, x4, yes, now if I'm talking in terms of specific features every now then I have 2 different values. This could be the local, this is being called as a local minima. This could be called as a local minima. This is also a local minima. This is also a local minima. But out of all the points, this is called as the global minima, which is also a local minima to all of the subsets of the features. Getting my point? अब इसको समझाने का तरीका. आज हमारी क्लास में अभी कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल? 30. Let's go for 31. I am also a student. Fine. So we are individual features. समझ रहे हो? हम individual features हैं. हम सबकी अंडरस्टैंडिंग की जो यूनिट है वो सेम है या अलग है? अलग है. अलग है. इसका मतलब किसी को थोड़ा जल्दी समझ में आ जाता है, किसी को थोड़ा डिलेड वर्जन पे समझ में आता है, किसी को बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा. Yes or no? Yes, ma'am. If this is happening, इसका मतलब क्या हुआ? If you people are, we all are different individuals, we all are having different set of IQ. So undoubtedly, if I'll plot for Nisha, Niyati, Neha, Sonia, Vandana, Akshita and all, तो क्या होगा? हम सबका ग्लोबल मिनिमा अलग अलग जगह पे होगा. हम सबका लोकल मिनिमा अलग अलग पॉइंट पर होगा. Yes or no? Because हो सकता है नियति को मुझसे पहले समझ में आ जाए, मुझे बिल्कुल लास्ट में समझ में आए. तो नाउ अगर मैं पूरी डेटा साइंस क्लास की बात करूंगी तो आई से आई हैव लोकल मिनिमा इन अ डिफरेंट फॉर्मेट विद रिस्पेक्ट टू फीचर्स. लेकिन अगर मैं पूरी क्लास को एज अ यूनिट बना करके प्लॉट कराती हूँ कॉस्ट फंक्शन, दैट मींस आई एम हैविंग अ मॉडल. आई पास, नाउ द मॉडल इज डेटा साइंस. I passed all the features. That means V31 are acting as the features. Now if I'll plot this model for the cost function, what should I have? I should have the minimum value of this local minimum. I should have the minima at which the cost is very less so that the learning can be high. Learning high कब हो सकती है? जब understanding better होगी. और understanding better कब हो सकती है? कैसे होती है understanding better? तुम क्या करते हो? रिवीजन से. रिवीजन से या फिर कुछ और भी करते हो? It's not just revision. एप्लीकेशन. Application. Something else. Problem Clear? solving. Exactly. You try to solve more and more problem, which is equivalent to revision.
It is equivalent to revision, but revision I'll take in terms of test. So right now we'll practice more. Getting my point? So that एक ही प्रॉब्लम को अगर मैं बार बार करती रहूंगी तो आई नो दैट आई लैंड अप टू लोकल मिनिमा व्हेन इट विल बी कॉल्ड एज अ ग्लोबल मिनिमा इफ द सेम टेस्टिंग कंडीशन कम्स आउट। आई नो द रिस्पॉन्स। ये तुम्हारे साथ होता है, एक प्रॉब्लम सॉल्व करके जाते हो, खासतौर पे मैथ्स का बोर्ड का अगर तुम लोगों ने एग्जाम दिया होगा, प्री बोर्ड 11th का दिया होगा या 10th का दिया होगा, यू ऑल नो कि जब तुम लोग अपने मैथमेटिक्स के सैम्पल पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व करके जाते हो, कोई ना कोई एक ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है जो तुम्हें बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि वो बिल्कुल सेम क्वेश्चन होता है जो तुम्हारा सैम्पल पेपर में होता है। यस हुआ या मैम। नहीं हुआ? यस एंड मैम। उसको करने में तुम्हें कितना टाइम लगता था? It is just 2 like that. मिनट। You know everything. You are just writing the step. You are not thinking about it whether you are doing it wrong or right or wrong. You are simply writing it. That is what we called as local minima. That means वहां पर टाइम कंस्ट्रेंट नहीं हुआ, वहां पर कॉस्ट क्या थी? कम थी, तो एक्यूरेसी क्या हो गई? ज्यादा हो गई। ज़्यादा हो इसलिए गई। शायद एक कंसेप्ट आता है जो हम लोग बोलते हैं, सबसे पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करा करो जो तुम्हें बहुत अच्छे से आते हैं। व्हाट वी मीन बाय बहुत अच्छे से? जिसमें सोचना समझना नहीं पड़े। Exactly. So now you people are getting my point. So we have to move towards the local minima. So जो तुम्हारा ब्रेन है, तो तुम्हारा ब्रेन भी इसी तरीके से काम करता है। तुम सबसे पहले वो चीज करने की कोशिश करते हो जो तुम्हें बहुत अच्छे से आती है। BTS टास्क बाद में करते हो because you know exactly what are your positives and what are your negatives, where you are weak at. Take my point. प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोग क्या काम करते हैं, जिस पर हम वीक होते हैं हम उसको एम्फसाइज करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन स्टिल वी वर्क ऑन ओनली द पॉजिटिव पार्ट। इट इज लाइक कि आई सिंपली से ओके उसकी ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी है। फॉर एग्जांपल इफ आई से ओके नियति, यस आई नो नियति की ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी है, शी विल टेक अ डे टाइम बट द वेरी नेक्स्ट डे शी विल रिस्पॉन्ड, आई नो दैट। माय पॉइंट, I know this. How I know this? With the experience. Now, the very next day, I don't know whether she will reply or not, but I just know this thing: whenever she will reply, or whenever she is studying, or whenever there is a new topic, I know she will. She gets understand because I know her grasping power is more. Undoubtedly, her local minima is coming fast. It is not delaying. Now, just see. जैसे हम कह देते हैं अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग तुम्हारे केस में जैसे क्लास इट इज लाइक दिस। ये जो डिप है ना, ये हमारा लोकल मिनिमा होता है किसी भी फंक्शन को अगर हम प्लॉट करते हैं। सो लीनियर रिग्रेशन में अगर मैं प्लॉट करूंगी तो लीनियर रिग्रेशन कुछ ऐसा दिखाएगा। नाउ दिस इज लोकल मिनिमा। अंडरस्टैंड द कंसेप्ट नाउ। कौन बताएगा मुझे इस पॉइंट पर पहुंचना है। यहां पर अगर तुम देखोगे तो कॉस्ट वैल्यू विद द फीचर्स, देयर इज ओनली वन फीचर दैट इज x1, और यहाँ पर कॉस्ट अगर मैं प्लॉट करती हूँ विच इज नथिंग बट y एक्चुअल माइनस y, अगर मैं प्लॉट करती हूँ तो मुझे ये वाली वैल्यू लोकल मिनिमा मिली है। I'll start my algorithm from this point. Who will tell me how to reach that point? इस पॉइंट से मैंने A से शुरू किया और मुझे C पर पहुंचना है, कैसे पहुंचू? लर्निंग भी हो, अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो, और समझ में भी आ जाए, मतलब मिनिमा पे सेटल भी हो जाए। एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम if somebody ask that particular thing again, so you can simply tell okay fine the answer is this, just like 2 का टेबल। कैसे पहुंचा जाएगा A से C पर? हम प्रैक्टिसिंग। कैसे प्रैक्टिस करूं, इसमें ग्राफिकली बता मेरे को बेटा। कॉस्ट कम कैसे कैसे A से C पे जाना है, कैसे जाऊं? एग्रीड, कॉस्ट कम होना चाहिए, सब कुछ करो, ये मान लिया, लेकिन जाऊं कैसे, कैसे मूव करूं, मॉडल को कैसे लर्न कराऊंगी, इनको कैसे लर्न कराऊं, कैसे मूव करूं? बीच में जितने डेटा पॉइंट्स है टुवर्ड्स डाउन। एग्जैक्टली A से जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं वहां से मूव करते करते उन सबको लर्न कराते कराते आई सिंपली रीच टू अ पॉइंट विच इज द मिनिमा। अगर तुम ध्यान से देखोगे एट दिस स्पेसिफिक पॉइंट मूविंग इन दिस डायरेक्शन cost function is more, moving in this direction again the cost function is more. Think about a kid. एक न्यू बॉर्न बेबी को सब कुछ बहुत अच्छे से आता है? नो मैम। एक 5 ईयर किड को बहुत अच्छे से आता है कुछ भी काम? नो। एक 18 ईयर ओल्ड एडोलेसेंट को और मेजर को? मैम मेजर को मेजर को कैसे आएगा? आएगा ना बेटे? एक्सपीरियंस के थ्रू। Exactly. So now what exactly we are doing? We are every now then we are actually first iteration whole data set, next iteration whole data set, third iteration whole data, practicing the model with the training. हर बार हर point पर training कराई जा रही है so that it can reach to the local minima. Now just understand. मैंने क्या बोला है?
एक आइट्रेशन पे पूरे डेटा सेट को, मतलब क्या हुआ, फर्स्ट लर्निंग जब मैंने कराया i इज इक्वल टू 1 पर मैंने 45 डेटा पॉइंट्स को लर्न ट्रेन कराने के लिए बोला, कॉस्ट कम आई, बहुत ज्यादा आई। नेक्स्ट आइट्रेशन पे मैंने फिर 45 को लर्न करने के लिए बोला, कॉस्ट कंपैरेटिवली इसके कंपैरिजन में कम आई। करते करते ऑलमोस्ट जब i इक्वल टू 10 हुआ तो कॉस्ट कंपैरेटिवली कम हो गई। Now at this particular iteration, whole of the data set is giving me a low cost. I'll again go to next iteration जहां पर मैंने again complete data set को learn करने के लिए बोला, again cost is coming out to be minimum. मैंने फिर iteration दी 13, 15th iteration पर settle out हो गया, 16th iteration पे जैसे ही मैंने learn कराया कॉस्ट बढ़ना शुरू हो गया। इसका मतलब at I equal to 15, my model is giving me the minima. Now this particular set of value is basically called as the local minima or the global minima for whole of the iterations, for whole of the model. Getting my point? Yes, बात समझ में आ गई? So now what I am doing, मैंने हर iteration पे change करा। Now my question is, iteration ज्यादा होनी चाहिए या iteration कम होनी चाहिए to reach the global minima और local minima? ज्यादा। अच्छा तो बेटा तुम्हारे हर क्लास में सिखाया गया है। हम लोग टेबल्स कब लर्न करना शुरू करते हैं मैथ्स में? आई गेस व्हेन वी आर इन फर्स्ट क्लास और इन सेकंड क्लास, आई गेस सेकंड क्लास। सेकंड बेटा क्लास। सेकंड में भी 2 का टेबल सिखाया था, थर्ड में भी सिखाया था, 10th में भी सिखाया था, 11th में भी, 12th में भी, फर्स्ट ईयर में भी। नो मैम, नहीं हाँ सिखाया। तो कब सिखाया था? सेकंड में। सेकंड में। सेकंड में सिखाने के बाद क्या किया? रोज सिखाते थे ओके टुडे वी विल लर्न अबाउट हाउ टू रिसाइट टेबल ऑफ 2, बस सिर्फ 2 ही सिखाया है। नो मैम। तो पूरा सेकंड क्लास का मतलब ऑलमोस्ट एन ईयर यू जस्ट लर्न ओनली 2 का टेबल, नहीं ना? नो मैम। तो आइट्रेशन कितनी होनी चाहिए? आइट्रेशन कितनी होनी चाहिए? आइट्रेशन कितनी होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, कितनी? ओके लेट्स इसको थोड़ा सा रिवर्क करती हूँ। जूही, जूही बेटा तेरी फ्रेंड कौन है क्लास में अभी डेटा साइंस वाली में? ऑलमोस्ट सभी होंगे बट कोई एक स्पेसिफिक। मैम प्राची। ओके प्राची। यस मैम। Okay, Juhi and Prachi are good friend of each other. Okay, so now Prachi, Yes, just ma'am. tell me how Juhi land up कि हाँ Prachi is my good friend. क्या सब सुनेंगे We often conversation? talk to each other. Okay, we often talk to each other. So Plus, she's ज्यादा from computer science. Okay, she is from computer science. First common feature class computer science. Second, बातचीत करने से अच्छे दोस्त बन जाते हैं। We help each other. हाँ तो कितनी बात करते हो रोज? मतलब तुमने Yes, ma'am, in ऑलमोस्ट assignment. पूरा एक सेमेस्टर रोज बात करी है तब कहीं जाके तुम एक दूसरे के अच्छे दोस्त बने हो। Almost. Almost, matlab class just understand almost 6 months it took to be good friend of each other. Okay. Ma'am, actually 4 days. Okay, ma'am. Okay, now it is 4 days. Class just understand 4 days. She took almost 4 days to know that we both are good friend of each other. Is it okay, Prachi and Juhi? Yes, ma'am. Anyone want to Yes. add on this thing? किसी को कुछ ऐड करना है इसमें so that I can actually explain you what we mean by iteration. मैम दोनों में ज्यादा से ज्यादा कॉमन फीचर्स होंगे। दोनों में ज्यादा से ज्यादा कॉमन फीचर्स होंगे तो इसका मतलब कुछ पॉजिटिव्स कुछ नेगेटिव्स जूही और प्राची में थोड़े बहुत सिमिलर होंगे, कुछ को वो दोनों अडैप्ट कर लेते होंगे, यही होगा ना? Fine. Now just think about they said कि in 4 days at least we get to know कि yes we can communicate. ऐसा तो दिमाग नहीं लगाया होगा ना अच्छा मैं आज प्राची से बात करूंगी, let's see. मैंने ऐसा तो नहीं सोचा होगा ना fine I'll talk to Prachi today and let's see can she be my friend or not. ऐसा तो नहीं सोचा ना जूही? ये रैंडम No, ma'am. एग्जैक्टली वी ऑल डू दिस थिंग। हम कभी सोच के नहीं चलते कि आज मैं उससे बात करके आऊंगी तो मेरी फ्रेंड बन सकती है या नहीं बन सकती। वी डोंट टेस्ट लाइक दिस। नाउ आइट्रेशन, आइट्रेशन का मतलब होता है कि आप अपने मॉडल को कितनी बार ट्रेन कराओ। वी आर ऑलवेज ट्रेनिंग आर एल्गोरिथम, हर मॉडल को हम बार बार ट्रेन कराते जा रहे हैं क्योंकि जब तक ट्रेनिंग नहीं होगी तब तक रिजल्टेंट इसका ठीक नहीं आएगा। बट द थिंग इज हाउ लॉन्ग वी हैव टू ट्रेन आवर मॉडल। हमारा आइट्रेटिव कैसा होना चाहिए?
क्या हमें एक छोटे से सेट 45 सेट के लिए क्या मुझे 15 आइट्रेशन देनी चाहिए, 15, 16, 17, so that I land up to local minima? No, it shouldn't be like that. It should be like कितनी आइट्रेशन आपके लिए परमिसिबल है, that defines as per the model. For example, if I want to reach to this local minima, I have another option. I'll just see my option. I jump here. In fact, I should take this color. मैंने यहां से शुरू किया, मैं इस पॉइंट पर पहुंची, दिस इज माई A1. मैंने यहां से जंप किया, आई रीच एट दिस पॉइंट, दैट इज माई A2. मैं यहां पर गई, दिस इज माई A3, दिस इज माई A4, and then I land up to this value. Can I do that? Anji class, can we do that? Ma'am, maybe we can, but how will we do it? हाँ, वहां भी आते हैं. अभी के लिए कैन वी डू दैट? यही काम आई गेस दूही और प्राची ने भी ये किया. इन लोगों ने 6 महीने नहीं लिए हैं कि रोज रोज बात करेंगे तो पता करेंगे कि हम अच्छे दोस्त हैं या नहीं है. इन्होंने 4 दिन भी नहीं लिए हैं. Moment they started communicating, they land up to like, okay, I can simply, okay, if today Juhi is not present, definitely in the evening she will call Prachi first. Okay, fine, let me ask Prachi कि प्राची आज डेटा साइंस की क्लास में क्या हुआ था. ऐसा नहीं था कि they took almost 4 days or they have to take almost 120 days to get to know exactly that they can be good friends. So they omitted out something. Same goes with our model also. What will I do? Instead of passing 45 batches, 45 data point, if I divide my 45 in some batches, for example, मैंने कहा कि let 1/3 of it will be passed to the model. और अगर ये 1/3 randomly 1/3 of the data points I identified and I pass it to the model and I'll start training that. Definitely वो जो 15 randomly आए होंगे वो मिनिमा पे लाई डाउन करेंगे या नहीं करेंगे? Okay, let me get into it. I have 45 data point. I said randomly 1/3 of the data point निकाल लो और उसको बैचेस में भेजना शुरू करो. तो कितने हो गए बैचेस 1/3 में? Batch 1, 3 batches of 15. 3 batches of 15. So I'll say A1, not A1. Let it be. I'll call it to be D1. Again 15. C3. Again 15. Fine. So now I'll say, and that to be random. Random का मतलब क्या हुआ? A1 में अभी जो values होंगी वो पूरे 45 में से कोई भी value हो सकती है 15. It is not first 15. Getting my point? I'm just saying randomly. Yes, so now what I am doing, I am passing the batches to a model. अब मैंने जो मॉडल बनाया है उस मॉडल को मैंने बैचेस में पास ऑन किया. पहले मैंने A1 को भेज दिया और A1 को बोला भाई तू चेक करके बता तेरी कितनी कॉस्ट आ रही है. डेफिनेटली इसका कोई ना कोई मिनिमम तो आएगा ही ना. Yes, ma'am. सिमिलरली मैंने नेक्स्ट आइट्रेशन में B2 को भेजा, इसका भी कोई ना कोई मिनिमम आएगा. They will almost compare it. Okay, उसके बाद इनको लगेगा कि हाँ fine, A1 का minima is comparatively come. Then again what they can do simply, okay fine, let's again send A1. A1 को भेजते हैं और हमने चेक किया तो automatically we got to know कि yes, the minima is coming out to be another smaller value जो कि previously थी उससे भी छोटी value आई है. Then again we'll send A1. So I think 3 या 4 आइट्रेशन में मुझे पता चल जाएगा because my data set is in random form. मैंने ऐसे ही बैचेस नहीं बनाए हैं, मैंने रैंडमली सिलेक्ट किया. इसका मतलब 45 में से कुछ 15 को मैंने सिलेक्ट किया और उन 15 को मैंने मॉडल में भेजा. सो इफ आई सेंड समथिंग इन दी बैचेस, if I'll send something in batches, then it will be like moving in a zigzag manner and will land up to the local minima. जब भी मैंने बोला आई गेस सुरभि ने बोला था कि मैम मे भी दोनों की कुछ कॉमन फीचर्स होंगे. गेटिंग माय पॉइंट? तो दिस इज व्हाट वी एग्जैक्टली अंडरस्टैंड कि ऐसा हो सकता है. नाउ जस्ट लेट मी नो यहाँ पर लॉसेस होने के चांसेस ज्यादा होंगे.
क्या यहाँ पर लॉसेस होने के चांसेस ज्यादा होंगे? सो आई होप सबको समझ में आ गया है कॉस्ट फंक्शन का मतलब क्या होता है एंड मिनिमा का मतलब क्या होता है। क्लियर हो गया? मैक्सिमा हम कभी भी नहीं देखते, हम मिनिमा की बात करते हैं। क्या अगर नंबर ऑफ आइट्रेशन, सो नाउ जस्ट अंडरस्टैंड वी कांट डिफाइन हाउ मेनी आइट्रेशन शुड वी गो फॉर. It can be 10, it can be 20, it can be 100 as per the data set, we don't know. But yes, there has to be something that is actually deciding कि कितना से कितना होना चाहिए. So हमने क्या करा, हमको पता चल गया कि अगर हम बैचेस में भेजेंगे तो शायद बेटर हो जाएगा. पहले केस में क्या किया था, हमने कंप्लीट डेटा सेट भेजा था. अब हमने बैचेस में भेजा. कंप्लीट में डेफिनेटली वो लोकल मिनिमम में तो फॉल हो रहा था, लेकिन नंबर ऑफ एपॉक और नंबर ऑफ आइट्रेशंस आर मोर. बैचेस में डेफिनेटली वो नंबर ऑफ आइट्रेशन आर लेस, लोकल मिनिमम में भी वो पहुंच रहा था. लेकिन आई एम आस्किंग क्या लॉस होगा? सॉरी जूही एंड सॉरी प्राची, पहले ही बोल रही हूँ. ओके प्राची, जूही से कभी लड़ाई हुई है? मैम इतनी ऐसी बात नहीं हुई कि लड़ाई हो जाए. अच्छा ओके. जूही? हाँ मैम. जूही? Yes, ma'am. हाँ बेटा, भी ऐसा हुआ है कि दोनों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो या जनरल छोटी मोटी आर्ग्यूमेंट हो गई हो? यस मैम. तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट जूही Exactly, I आई know. रिमेम्बर. नहीं हाँ, समथिंग that's okay. हैपेंड. हाँ that's okay. ये it's between you. I don't want to know exactly क्या हुआ था, but हुआ ना. So let's just understand ऐसा हुआ. There is a some gap has occurred. Okay now. You were already aware of कि exactly प्राची misunderstand कर सकती है, या प्राची तुमको already पता था कि जूही misunderstand कर सकती है? यस मैम. आइडिया था? यस मैम. दोनों को आइडिया था कि तुम दोनों एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड कर लोगे? She does not even remember. I know. I do. नहीं, that's okay. I don't want that. But were you aware of that? Juhi is full of misunderstandings, or Prachi is full of misunderstandings. No ma'am, nothing like that. Fine. Class, can I say that the moment that particular event occurred, that means there is a loss? Yes ma'am. There is a loss. I guess अगर Yes, वो ma'am. मिसअंडरस्टैंडिंग रही है तो अनडाउटेडली प्राची और जूही के दिमाग में बहुत क्लैरिटी है if such kind of situation again occur, how to deal it. क्या बताना है और क्या नहीं बताना. Getting my point? Yes ma'am. So Yes, rather ma'am. than giving the complete piece of information, now what they will do, they will divide it. Okay, I have to tell this much, or I shouldn't tell this point of thing. So this is what exactly happened with your the number of iterations are less. Misclassification will be more. That means losses are there. That means your accuracy will definitely have, but definitely there will be misclassifications. Getting my point? So batches में काम कराने का नुकसान सिर्फ यही होता है. क्या है? अभी तो हमारे पास जो डेटा पॉइंट का वैल्यू था, दैट वाज अ कंप्लीट सेट. दैट मींस 45 डेटा पॉइंट डिवाइडेड बाय 3 इज 15 15 15. देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी जहां मैं उसको बैचेस में डिवाइड करूं तो इक्विवेलेंट बैचेस ना बने. अभी 15 15 15 था, हो सकता है वो 15 15 10 रह जाए. तो द इंफॉर्मेशन, चांसेस ऑफ इंफॉर्मेशन गेट लॉस, या फिर मॉडल की ट्रेनिंग परफेक्ट नहीं हो सकती, लॉसेस रहेंगे. तो दैट मींस कॉस्ट फंक्शन बढ़ जाएगा और एक्यूरेसी कम हो जाएगी. क्लियर हुआ? Clear to everyone? Fine. Yes, ma'am. So this is what exactly happened. So the last piece of information that I am going for, after that I'm just winding up. You have a cost function of c of theta, where you had written something as 1 by m, where m is the total number of samples. I is basically the point where we are starting from 1 till the total number of samples. Then we write something y log of y predict plus 1 minus y log of 1 minus y predict. यही लिखा है ना क्लास हम लोगों ने इक्वेशन? Yes, ma'am. Class, just see. If I'll say y is equal to 0, so we have only two classes as 0 and 1 for the logistic regression. Whenever we are creating a logistic regression for the classification,
then it is class 0 or class 1 because हमारा जो function है sigma of your WTX plus B, it is just giving अगर वो 0.5 है 5.5 से बड़ा है तो क्लास 1 को बिलोंग करता है, अगर वो 0.5 से छोटा है तो क्लास 0 को बिलोंग करता है. So if my y is equal to 0, what is happening? This term will be equal to 0. Yes, ma'am. So we are left with ये we are left with 1 minus 1 into we are left with only log 1 minus y predict. Am I right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. And if I'll say my y is equal to 1, then we are left with ये वाली पूरी की पूरी term चली जाएगी. Yes, ma'am. We are left only with this term, which is nothing but log y z. Since we are using our cos function with a mathematical formula, that is log, this sigmoid is also called as logit. Fine. So the cos function के लिए अगर हम बात करें, क्योंकि log यूज किया जा रहा है, हम इसको क्या कह देते हैं? लॉजिट. तो कई बार अगर तुम पढ़ने की कोशिश करोगे तो तुम्हें बहुत जगह पे लिखा होगा लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज आल्सो कॉल्ड एज लॉजिट रिग्रेशन. Why is it called as logit regression? Because it is using a log function for the calculation of cos function. Is it clear to everyone? Fine. So if I'll say that my cos function में अगर मेरा function y equal to 0 हो जाता है, then I have log of 1 minus y of predict. If my y is equal to 1, then we have log of y predict. So what exactly we are getting? So when my y, this y predict is approaching to 0, what will be happening to the cos function? अगर मेरा y predict 0 को अप्रोच कर रहा है, cos function क्या हो जाएगा? That means देखो ना, log of 0 will be equal to Not defined. log of 0 क्या होता है? Ma'am, 1. अगर log of 0 1 होता है तो इसका मतलब क्या हुआ? cos function क्या हो जाएगा? It is cos function ही ना, for two cases. अगर log 0 1 होता है तो cos function 1 क्या डिफाइन कर रहा है? Local minimum. Cos function is large, 1 is high. बेटा देखो ना, यहाँ पर सिर्फ दो ही वैल्यूज है ना, log 1 minus log predict. यहाँ पर सिर्फ है log y predict. If I am saying y predict is equal to 0, then it is undoubtedly log of 0 which is equal to 1. 1 का मतलब क्या हुआ? It belongs to cos function. And cos function अगर 1 आता है तो undoubtedly the cos function is very high. Cos function का high होने का मतलब क्या हुआ? मॉडल की जो probability estimation है that is very low. Yes or no? तभी तो log 0 1 हो रहा है. Yes, ma'am. So if the prediction is low, then we can simply say that it will be low for the positive instances and it is large for the negative instances. That means the value for class 1 will be having the probability values or probability estimation closer to 0. Is it clear to everyone? Log of 0, log of 0.1, log of 0.2 will give you values closer to 1. check करके देख लेना. Log of 0 is 1, log of 0.1 is क्योंकि